Are we facing some fear, anxiety in this beautiful pregnancy journey due to some past experience which we've had? Some pregnancy loss, whether it was in early pregnancy, 4th, 5th month, during the last phase of pregnancy, during labor, immediately after birth, during nursery admission of our baby. Have we lost our child? You know, in medical language we term it as perinatal grief. वो grief जब हम अपने बेबी को लूज करते हैं, and you know that grief की quantum can be different for each and every one of us. For a few it may be just an abortion, something was not too right, just an accident of nature, which we as doctors always counsel and tell you, just take it as an accident of nature, and we just leave it at that. But for some people it may be very, very difficult to accept this accident and feel that loss and carry it through even the next pregnancy. I just want to tell कि please इसको बहुत लंबा नहीं लेके जाना, स्पेशली अगली प्रेगनेंसी करने से पहले इसको रिजॉल्व करो. दिस ग्रीफ नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड. एंड सपोजिंग यू ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन योर न्यू जर्नी, but all the time your mind is wandering and it is creating thoughts of previous loss which you've had. It's not very healthy. I just want that both of you as a parent understand it's okay, it's normal to feel sorry. बुरा लगना, चाहे वो pregnancy just early थी 3-4 months पे, चाहे हमें abort करनी पड़ी because the baby was not normal, maybe it is at the 5th month or 6th month, or sometimes everything was going perfect for us and suddenly one fine day when we got the ultrasound done, it showed that things are not fine at all. Yeah, during the process of labor कुछ suddenly came up and that miracle moment of labor was transformed for you into a very, very deepening grief situation where you had to lose your baby. It's okay. Please उसको thought को आने दो. I always tell, don't shun away the thought. Let it come. एक बार बहुत बुरा लगता है ना, उसको feel करके just get over with it once. हम हमेशा कहते हैं as doctors, नहीं it's okay, आगे नहीं होगा, everything is going to be fine, which is a fact. नेक्स्ट टाइम सब ठीक ही होना है. अभी भी जो आपकी जर्नी प्रेगनेंसी की चल रही है वो एकदम अच्छी रहेगी. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन. वी आर देयर टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स डियर. बट इफ यू वांट टू फील द ग्रीफ, फील इट एंड गेट ओवर विद इट. एंड हाउ डू यू गेट ओवर विद दैट ग्रीफ? यू गेट ओवर विद दैट ग्रीफ जब आप अपने उस हर सवाल जो आपके माइंड में चलता है उसका आंसर देंगे. ये मेरे साथ क्यों हुआ? I was being very careful. I took all the precautions. मैंने सब कुछ अच्छा किया, मैंने meditate भी किया, मैंने अच्छा खाना भी खाया. I took care, still it happened. Because we have to understand nature knows best. हमारी nurturing की बहुत value है, but nature के ऊपर हम नहीं जा सकते. We have to trust nature कि वो decision was the best for you and your baby to come. I as a doctor cannot be very sure. You as a mother cannot be very sure that inside the developing baby is absolutely fine. Even in the best of places, risk of having an abnormal baby is between 1 to 2%. वो zero तो नहीं कर पाए. So we should understand that fact and accept it and tell our mind and give an answer to our mind that this was right. That baby could not survive. It's fine. Whether you had a baby whom you could hold in the arms, whether it was so small that you couldn't even see. We can have two people having the same sadness and depression related to this, but the answer to your mind is the same.
एंड ये सब कोप करने के लिए यू मे नीड हेल्प. You know, initial reaction after losing a baby, whether at whatever gestation, is acute distress. You feel as if there's something devastating has happened in your life. You feel guilty that you could not take care of your baby. Everybody around you also, even if they're not saying it, they're actually feeling it, that something was not right, that you could not carry the pregnancy. But believe me, these are all our feelings. We have to get over them. हमें अपने माइंड को समझाना है कि it is nothing to do with you. It is basically the developing baby inside and the support which nature is giving to us, which sometimes is at fault. And moreover, the good part about it is that अगर वो हुआ, all mistakes are a stepping stone. Even if it was an accident of nature, we are more careful today. We are more clear कि what I have to do, what I don't have to do. Today you are more confident. You are clear that I am willing to take all responsibility to be more careful, to do whatever is best. Maybe जो पहले नहीं किया था वो करने का चांस नेचर आपको दे रहा है. This is the way you have to train your mind. You have to be very clear that be confident, be clear that everything in this pregnancy is going to be perfect. You know, there is a very important art of visualization which you have to practice today. Visualize your baby growing in your womb, absolutely healthy. Your womb is lighting with God's love and power, and your divine baby, your divine angel is sitting in your womb, wrapped in God's pure love, purity, good health. If your mind is creating all the time these thoughts, तो automatically जो आपने lose किया वो आपको याद नहीं आएगा, because अगर वो आप बार बार याद करेंगे तो this pregnancy and this baby will not get that bonded with you. Isn't that a reason enough to tell your mind now we are not worried? जो पीछे हुआ, we are fine, we've learned and we've become a better parent. We've understood what all more we need to do today. Both you and your partner need to once and for all resolve the grief. Otherwise, जो अभी present pregnancy है उस बेबी में वो fear automatically आएगा. आपका कनेक्शन उससे इतना नहीं बनेगा. आप बार बार पुरानी प्रेगनेंसी की वजह से उसके साथ फेयरफुली अटैच होगे, लविंगली अटैच नहीं होगे, लविंगली बॉन्ड नहीं हो पाएंगे. जब लविंगली अटैच होंगे, लविंगली बॉन्ड होंगे, तभी वो कनेक्शन बनेगा एंड तभी वो प्रेगनेंसी भी हेल्दी होगी, वो बेबी भी हैप्पी बेबी निकलेगा. एंड वी आर ऑल स्ट्राइविंग टुडे टू हैव अ परफेक्ट बेबी. जो चीज़ वी डोंट वांट in our pregnancy to happen, if we are all the time thinking and visualizing that, automatically result उतना बढ़िया नहीं आएगा. So today if resolve नहीं किया पुराना grief, तो अब भी कर सकते हैं. even if you are pregnant, कुछ टाइम चला भी गया, don't worry, you have the golden months left and the first year of your baby's life. Your baby is willing to learn and understand each and everything. तो वो करें. तो उस grief को resolve करने के लिए पहले connect yourself. अपने आप को pure, positive, powerful thoughts देते रहें. I am a very strong mother. I am going to take care of my child very lovingly. I have a healthy baby growing in my womb. मेरा baby अंदर फरिश्ता है. भगवान की प्यार और शक्ति से भरपूर वो अंदर मेरे गर्भ में रहकर बढ़ रहा है, हेल्दी है, हैप्पी है. ये वाला कनेक्शन टू सेल्फ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ऑल्सो गिव सम टाइम टू मेडिटेट. सिट एंड फील दैट गॉड्स लाइट एंड पावर इज़ फॉलिंग ऑन योर बॉडी. ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज़ हेल्दी. इट इज़ लाइटिंग विद गॉड्स लव एंड पावर. Your womb is healthy and glowing with energy and taking care of your baby. आपकी बॉडी के सारे अच्छे हार्मोन्स निकल के आपकी सारी स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को एकदम कम कर देंगे एंड कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा एज अ न्यू मदर.
अ स्ट्रॉन्गर एंड अ वाइजर मदर। फिर भी अगर बार बार थॉट आता है तो कोई साइकोलॉजिस्ट का कंसल्ट लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनके साथ भी आप सेशंस कर सकते हैं, वो भी आपको काउंसलिंग सेशंस देंगे। अपनी फैमिली के साथ बात करिए, आपको बार बार वो थॉट आता है, शेयर इट एंड देन क्लियर इट। इवन विद योर गायनेकोलॉजिस्ट यू कैन शेयर। वंस यू गेट दिस काइंड ऑफ सपोर्ट, आप इस ग्रीफ से बाहर आ जाएंगे। बट अल्टीमेटली यू हैव द पावर टू कम आउट ऑफ दैट ग्रीफ, because you are now a confident mother. And be very clear, visualize your baby within your womb, resting in the palace of your womb. एकदम फरिश्ते की तरह आपका बेबी प्यार से आपके गर्भ में रह रहा है। बार बार इसको विजुअलाइज करिए, तो ऑटोमेटिकली ग्रीफ नहीं रहेगा। सिर्फ लव, हैप्पीनेस, पीस, पावर फील होगी और वही आपके बेबी को जाएगी, जिससे आपका बेबी एक पावरफुल सोल बनेगा, एक पावरफुल, हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल बेबी बनेगा। बिकॉज सारी वैल्यूज़ वूम में ही शुरू होनी है और वही उसके कैरेक्टर और पर्सनैलिटी का हिस्सा बनेंगी। तो फियरफुल बेबी नहीं चाहिए, एंग्शियस बेबी नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंट, लविंग बेबी चाहिए, हैप्पी बेबी चाहिए।